जय जगन्नाथ friends, this is Vasu Panda. Welcome to Master English Physics one set chapter wise as per the commitment हिसाब रे तुमको कहतली मो पाखरे पहुंचले पहिले मु केबे लेट करे नाही मो पारे पहुंचले कोनोसी मटेरियल पहुंचले मु केबे पिलांको दबारे अवहेला करे नाही लेट करे नाही पहुंचला आजी पहुंचला दिन वाला पहुंचला आजी ही तार प्रिंट काढी के आजी ही पिलांको दिया तुमको ऑलरेडी बायोलॉजी पूरा दिया हितला बॉटनी जूलॉजी आईटी रो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हिची आईटी रो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हिची शॉर्ट दिया है नहीं माने हमर साइंस पिला मानकर कंप्लीट सिलेक्शन है जो साइंस पिला कर स्पेशली कंप्लीट सिलेक्शन है जो पूर्व थर भी तुमको दिया हितला सेत्रु किछिटा माने डिडक्ट करके कम दिया हितला बट एठी वन सेट अच्छी वन सेट इन द सेंस सब चैप्टर रो वन सेट क्वेश्चन अच्छी माने पढिबा एथरु ए जोतक दिया होची टिके अधिका दिया होची एथि पई जे वन सेट माने एतिकी ही पढिबा आउ किसी पढिबा नहीं एतिकी पढिबा दैट्स ऑल पता बुझला तो जो माने भी जॉइन होचे शेयर कर दवा फ्रेंड्स मान सहित शेयर तमरो इच्छा है सेटा तम ऊपर डिपेंड कर वेदर यू विल शेयर और नॉट वीडियो वीक स्क्रीन रे एते समय मो पाखे नथिला मु सेति में कर दोछि बिले इंग्लिश हाँ इंग्लिश देखिबा 8:45 बेले इंग्लिश क्लास गोटे करिबा बट लेट द फिजिक्स कंप्लीट फर्स्ट तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 बुझेला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर 1 अछि तार कोन कोन प्रोबेबल क्वेश्चन अछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम राइट डाउन लिखिबा समझते स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम give its application to derive Coulomb's law from it, then electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. You know, first question. State and explains Gauss theorem, give its application to derive Coulomb's law from it, electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. Your first question. Second question टिके कम important अछि. Okay, सेटा होची what is electric dipole and dipole moment? Derive an expression for the electric field intensity at a point on the equatorial line or on broadside on position or on tan beta position of the electric dipole. Less important. Important is कम अछि. देन 3 नंबर एटा भी कम इंपोर्टेंट अछि फिर भी जेतु वन सेट रे दिया होची तेनो क्वेश्चन कवर करबा कथा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट derive an expression for the electric field intensity at a point on the axial line or end on position or tan position of the electric dipole okay ये तीनटा क्वेश्चन दिला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स ये तीनटा भितर फर्स्ट होची द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कदा बुझला जो माने सेशन टाको लाइक करना है लाइक कर दबा जा फल मते टिके आग्रह हबो ए भलिया जिंस तुमको परवर्ती पर्यायर मते करिकि दबा पई बिले चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 कोन अछि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये होची चैप्टर 2 2 नंबर एथरे रहिला 1 नंबर कोन रहिला derive the expression for effective capacitance of capacitors connected in octants of series and parallel. Author कहि दोछि derive the expression for effective capacitance of capacitors connected in octants of series and parallel. Chapter 2 electric potential and capacitance रो प्रथम प्रश्न सेकंड क्वेश्चन होची define capacitance of a C of a conductor define capacitance of a C of a conductor derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor filled with dielectric material
ये थिला 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है define electric potential, define electric potential, derive an expression for the potential at a point on the axial line of the dipole। ये थिला चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 वन शॉट फिजिक्स वन शॉट मतलब मुझे कहले फिजिक्स वन शॉट। नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन करंट इलेक्ट्रिसिटी ये है चैप्टर 3। यार फर्स्ट क्वेश्चन हूँ स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। Apply these to obtain the condition for a Wheatstone bridge। एमसीक्यू पृथ्वी रे केही दे परिबो नै सोमराज पृथ्वी रे केही दे परिबो नै एमसीक्यू सिलेक्शन कारण फिजिक्स रे हजार हजार एमसीक्यू अछि रे बाबू। विगत 12 वर्ष रो एमसीक्यू पढ़ो हे जिवो तुमरो। तो क्वेश्चन कोन थिला स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। Apply these to obtain the condition for a Wheatstone bridge। Number 2 2 नंबर कौन से 2 नंबर अच्छी obtain an expression for drift velocity of the charge carriers in a conductor। Establish the relation between electric current and drift velocity। Question number 2 है obtain an expression for drift velocity of the charge carriers in a conductor। Establish the relation between electric current and drift velocity। हला जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन अच्छी explain the heating effect of current and state Joule's laws of heating। explain the heating effect of current and state Joule's laws of heating। Define electric power and calculate the energy consumed by 100 watt 220 volt bulb in 2 minutes when connected to a 220 volt source। ये थिला क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर थिला करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो परवर्ती प्रश्न होची चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट BIOT SAVART apostrophe S बायोट सावर्ट्स लॉ। स्टेट बायोट सावर्ट्स लॉ। Apply it to derive an expression for magnetic field intensity at the center of a current carrying coil। क्वेश्चन आउ थरे कहूँ हला चैप्टर होची 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टेट बायोट सावर्ट्स लॉ। Apply it to derive an expression for magnetic field intensity at the center of a current carrying coil। Number 2 with a neat diagram describe the construction and working of a moving coil galvanometer। हला with a neat diagram describe the construction and working of a moving coil galvanometer। ये हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर कौन छी explain with a circuit diagram। explain with a circuit diagram how a galvanometer can be changed into an ammeter of a given range and a voltmeter of a given range। Question थिला explain with a circuit diagram how a galvanometer can be changed into an ammeter of a given range and a voltmeter of a given range। चैप्टर
चैप्टर 5 रे कौन बोले मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैग्नेटिज्म एंड मैटर रो क्वेश्चन देखा मैग्नेटिज्म एंड मैटर रो कौन अच्छी देखो derive the expression for the magnetic field intensity due to a war magnet at any point on its broadside and position. Find the same when the length of the magnet is small when the length. Question number 2. Derive an expression for magnetic point in the end on position due to a small bar magnet at intense. Derive an expression for magnetic points in the end on position due to small bar magnet. Chapter 6 electromagnetic induction. Chapter 6 कौन electromagnetic induction ये होची chapter 6 पे हाँ static induction option question number 1 रहिला find an expression for EMF induced in a coil rotating with uniform speed in a uniform magnetic field and plot this EMF as a function of time. What will such EMF? Author कहि दोछि. Find an expression for EMF induced in a coil rotating with uniform speed in a uniform magnetic field. Plot this EMF as a function of time. What will such EMF? The nature of current. Question number chapter number 7 number chapter alternative current. Chapter number 7 होची alternative current. एठी कोन रहिला explain what is the effective value of an AC. Explain what is the effective value of an AC and derive the expression for the same in terms of its peak value. बुझेला बिले तो क्वेश्चन टा रहिला explain what is the effective value of an AC and derive the expression for the same in terms of its peak value. Question number 2. Deduce an expression for current in an AC circuit containing pure inductor. So graphically the variation of current and EMF with time. Pin number रहिला derive an expression for current in a circuit containing an AC source in series with a capacitor. So graphically the variation of current and EMF with time. Author कहि दोछि. Derive an expression for current in a circuit containing an AC source in series with a capacitor. So graphically the variation of current and EMF. Hala idla question capacitor. So graphically the variation of current EMF with time. Next question देखियो. Next question होची chapter 9 ray optics. Ray optics रू कौन with a neat ray diagram explain the construction and working principle of a compound microscope. Obtain an expression for magnifying power. Author repeat like with a neat ray diagram explain the construction and working principle of a compound microscope. Obtain an expression for magnifying power. Next question है discuss refraction at a spherical surface. Hence derive the lens maker formula for a double convex lens. आमे पढुचे chapter wise one set question physics 2000 ये तो आउ मासे परीक्षा अछि. Discuss refraction. Okay. Next question. 3 number रहिला
Draw and discuss about the ID curve for a transparent glass prism. Draw and discuss about the ID curve for a transparent glass prism. Hence, derive the formula for Ri of the material of the prism. Okay. ये तेरा ray optics फिर है. This is the question of ray optics. बर्तमान देखिवा chapter 10 web optics. Web optics रे कौन कौन important one set questions जहाँ हमें पढ़ीबा बर्तमान. एक नंबर आइला discuss Huygens principle. Huygen apostrophe S. Huygens principle. Discuss Huygens principle. Prove the laws of reflection of principle. Light using this. Discuss Huygens principle. Prove the laws of reflection of principle. Light using this. Next question होची chapter 11. 11 number chapter. 11 number chapter होची dual nature of matter and radiation. 11 number chapter कौन पिले? Dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. Question 1. अरे हमें पाऊचे. Explain what is photoelectric effect. Explain what is photoelectric effect. Mention its characteristics. Mention its characteristics. Discuss Einstein's explanation of the phenomenon. कौन? Discuss Einstein's explanation of the phenomenon. Question number 2. 2 number कौन ची? What is photoelectric effect? What is photoelectric effect? Frame Einstein's photoelectric equation. Discuss how it gives the concept of threshold frequency. What is photoelectric effect? Frame Einstein's photoelectric equation. Discuss how it gives the concept of threshold frequency. Chapter 12. Atoms. Chapter 12 वाला कौन पिले? Atoms. तो एटम रू कौन आउची क्वेश्चन देखो. State Bohr's postulate for hydrogen atom. State Bohr's postulates for hydrogen atom. Derive an expression for the energy of the electron in its ninth stationary orbit. NTS stationary orbit लिखाइए. State Bohr's postulate for hydrogen atom. Derive the expression for the energy of the electron in its NTS stationary orbit or 9 whatever. तापर रहिला next question. What are mass defect? What are mass defect? Binding energy and packing fraction. What are mass defect? Binding energy and packing fraction. From BE, per nucleon versus mass number graph. From B dot E per nucleon, NuCleon per nucleon versus mass number graph. Then discuss about nuclear stability, fusion. Then discuss about nuclear stability, fission, fusion. Chapter 14, 14 number, last chapter. Last chapter कौन सी बोले? Explain energy band theory. कौन अच्छी? Explain energy band theory. Discuss the classification of solids. Discuss the classification of solids as conductors, insulators, and semiconductors on the basis of band theory. Explain energy band theory. Discuss the classification of solids as conductors,
insulators and semiconductors on the basis of band theory. ये थिला physics one set 2025. ओके यार पीडीएफ परवर्ती पर्यायर मैं तुमको देवी चिंता करिवार किछि नै जो माने कहउछो बट नॉट नाउ वर्तमान दिया जीव नाही सी यू द नेक्स्ट सेशन बाय टेक केयर जय जगन्नाथ।